Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Let's Medicine. In this video, I'll tell you about the foramina of skull in relation to specifically the cranial nerves. As we already know that we have 12 cranial nerves and each of them passes through a different foramen of the skull in order to leave the head and enter into the neck portion. सो इस वीडियो में सबसे पहले आई टेल यू अबाउट द वेरियस इंपॉर्टेंट फोरामिना ऑफ द स्कल और उसके बाद मैं आपको 12 क्रेनियल नर्व्स को वन बाय वन बताऊंगी कि वो किस फोरामिन से पास करती है. सो कीप वॉचिंग. Here you can see that we have a very colorful and rough diagram of the various foramina of the skull, which tells us about the location of each of the foramen. It is actually a representation of the location of the important foramina, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इंटीरियर ऑफ स्कल में हमारे पास जो वेरियस क्रेनियल फोसा हैं उसमें कौन सा फोरामेन कहाँ पे प्रेजेंट होता है. इसके बाद आई टेल यू अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्रेनियल नर्व्स जो कि हर फोरामेन से पास करती हैं. सो सबसे पहले दिस एंटीरियर पोर्शन it actually represents the anterior cranial fossa. This is the middle cranial fossa and this is the posterior cranial fossa. In the anterior cranial fossa आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास cribriform plate represent हुई है. This triangular portion actually represents the presence of crista galli. तो यहाँ पे cribriform plate है और इसके various जो हमारे पास foramina होते हैं वो यहाँ पे present हुए हैं. So this is the cribriform plate. Just posterior to the cribriform plate, we have two optic canals, one on each side. Posterior to the optic canal, यहाँ पे as you can see that there is a representation of the superior orbital fissure on both sides. यहाँ पे it is actually the presence of the pituitary fossa where the pituitary gland lodges. It is also known as the hypophyseal fossa. सो पोस्टीरियर टू दी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर यहाँ पे हमारे पास मिडिल क्रेनियल फोसा जो है वो स्टार्ट हो जाता है. मिडिल क्रेनियल फोसा में हमारे पास ये एक इन्वर्टेड सी शेप्ड फोरामेंस बनते हैं जो कि जो बिल्कुल सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के पीछे हमारे पास एक राउंडेड सा फोरामेन है दैट इज़ नोन एज द फोरामेन रोटंडम. देन वी हैव ओवल शेप्ड फोरामेन ऑन बोथ साइड. दिस इज़ नोन एज द फोरामेन ओवेल. And the small pin-like foramen that is present posterior to the foramen ovale, it is actually known as the foramen spinosum. याद रखिएगा कि ये जो foramen है ये दोनों sides पे present होते हैं. So there are two in number. They are actually present in pairs, one on each side. Now coming towards this irregularly shaped foramen, this is known as the foramen lacerum. After this, we come towards the portion of the posterior cranial fossa. Posterior cranial fossa में हमारे पास यहाँ पे आपको ये जो triangular shaped structure नज़र आ रहा है, this is actually the diagrammatic representation of the petrous part of the temporal bone. पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन की ये जो आपको ये डॉटेड जो इरेगुलर सी जिगजैग लाइन है, दिस इज़ एक्चुअली दी सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पेट्रस पार्ट और यहाँ पे दिस इज़ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बोन. सो यहाँ पे हमारे पास इंटरनल एकाउस्टिक मीएटस प्रेजेंट होता है. हेयर दिस लार्जेस्ट फोरामेन as you can see over here, this is the foramen magnum. Foramen magnum के lateral margins पे हमारे पास दो canals हैं. These are known as the hypoglossal canals. And at the junction of the occipital bone and the petrous part of the temporal bone, here we have the jugular foramen. So this is basically a very easy representation of the foramina of the skull. Now we will talk about the cranial nerves that pass through these foramina. Alright, so as we all know कि हमारे पास total 12 cranial nerves होती हैं. तो जो क्रेनियल नर्व्स हमारे पास फोरामिना से पास करती हैं, आई विल टॉक अबाउट दीज और इन्हीं के साथ मैं उनके जो रिलेटेड फोरामिन है उनके बारे में डिस्कस करूंगी. तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है दैट इज़ बेसिकली द ऑल्फैक्टरी नर्व. और ऑल्फैक्टरी नर्व जो है इट पासिस थ्रू द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट. बेसिकली अगर आपको याद हो तो हमने पिछली वीडियो में एंटीरियर क्रेनियल फोसा की वीडियो में डिस्कस किया था कि जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है दैट बेसिकली हैज़ वेरियस सीव लाइक स्ट्रक्चर. It has various foramina through which the various olfactory filaments pass. तो total 15 to 20 olfactory filaments जो हैं वो उसके through pass करते हैं. इसके बाद we have the second cranial nerve that is the optic nerve. So as the name suggests, it passes through the optic canal.
Now, before going towards the other cranial nerve, सबसे पहले I would like to tell you कि जो structures हमारे पास extraocular muscles जो होते हैं, they are basically supplied by a group of cranial nerves. तो जो extraocular muscles हैं जो कि orbit में present होते हैं, तो जो cranial nerves हमारे पास orbit की तरफ जाती हैं, तो हम उनको एक ही group में consider करते हैं, and they pass through the same foramen of the skull. So basically, the extraocular muscles of the eyeball, they are supplied by the third, that is the oculomotor, the fourth, that is the trochlear, and the sixth, that is the abducent nerve. So basically these three nerves, they pass through the superior orbital fissure in order to leave the interior of the skull and to enter into the bony orbit. Now coming towards the further cranial nerves, so we are now left with the fifth cranial nerve, that is the trigeminal nerve. So as we already know that the trigeminal cranial nerve जो है, that basically divides into three divisions. These are denoted as V1, V2 and V3. V is actually the Roman representation of 5. तो हम इसको V1, V2 और V3 के नाम से जानते हैं, और इसके नाम जो हैं, this is V1 जो है, that is the ophthalmic division of the trigeminal nerve. Then we have the V2, that is the maxillary division, and V3, that is the mandibular division. तो V1 as the name suggests ये ophthalmic division है, तो it will go towards the eye. तो जो भी structure हमारे पास orbit की तरफ जा रहा है, eye की तरफ जा रहा है, that passes through the superior orbital fissure. उसके बाद वी हैव द मैक्सिलरी डिवीजन और द V2. तो जैसा कि मैक्सिलरी में R आता है, इसी तरह रोटंडम ऑल्सो स्टार्ट्स विद R. तो आप इसको इस तरह याद रखें कि मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल passes through the foramen rotundum. Now the mandibular division of the trigeminal, it passes through the foramen ovale. So this is the distribution of the trigeminal nerve. ठीक है, इस तरह से ट्राइजेमिनल की जो डिफरेंट डिविजन्स हैं वो 3 डिफरेंट फोरामिना से पास करती हैं. Now we are left with the other 6 cranial nerves. So it has now coming towards the 7th cranial nerve. तो जो 7th और 8th cranial nerve है, they both pass through the internal acoustic meatus that is located on the posterior slope of the petrous part of the temporal bone. The 9th, 10th and 11th cranial nerves, namely the glossopharyngeal, vagus and the accessory nerve, they pass through the jugular foramen. The hypoglossal nerve, that is the last of the cranial nerves, cranial nerve number 12, it passes through the hypoglossal canal. Now we are left with the foramen magnum, that is the largest foramen of the skull. So basically foramen magnum से हमारे पास the lower part of the medulla oblongata along with the meninges and the spinal part of the accessory nerve, that is the 11th cranial nerve, वो pass करते हैं. जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि इस वीडियो में आई विल ओनली फोकस ऑन द क्रेनियल नर्व्स दैट पास थ्रू द फोरामेन, ताकि आपको कुछ मिनट्स में एक रिवीजन हो जाए कि कौन से फोरामेन से कौन सी क्रेनियल नर्व पास करती है. इन ऑर्डर टू वॉच अ डिटेल्ड वीडियो, you can watch other videos that are on the topics of the anterior, middle and posterior cranial fossa, जिसमें हमने हर फोरामेन के साथ उसकी बेसिक इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशंस के बारे में बताया है. और इसके अलावा इफ़ यू वांट टू लर्न द ट्रांसमिशंस ऑफ द फोरामेना ऑफ द स्कल इन अ वेरी ईजी वे, you can watch our another video that is on the mnemonics, जो कि different foramina of the skull से जो different structures पास कर रहे हैं, either they are nervous structures यानी कि cranial nerves या फिर different vascular या ligamentous structures, तो उनके बारे में different mnemonics की एक compilation हुई है. You can watch our video which is already present on our channel. Thank you for your time and keep watching Let's Medicine.